वो हमारा होगा कायोपैट्रिक्स का मशीन, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने लेवल 1 किया था ना, आज लेवल 2 करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो मेरे लिनक्स में मैंने अपनी आईडी पहले से निकाल रखी थी जो कि 111 था। ये हमारी कायोपैट्रिक्स की आईपी एड्रेस थी। तो अगर मैं कमांड दिखाऊँ आपको, नेट डिस्कवर -i ethio -r और हमारी सबनेट। सो अगर मैं यहाँ पे सीधा साइड बाय साइड एक स्कैन भी चला देता हूँ, एंड एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमारे ब्राउजर पे 192.168.0.1111 जो कि है हमारा लॉगिन पेज। सो मैं इसमें एक और चीज करूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे बर्ब सूट यूज करूंगा आज। सो बर्ब ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्राउजर के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं। प्रॉक्सी, तो यहाँ पे हम अपना आज ये सेटअप करेंगे पहला। सी सर्टिफिकेट, और मैं यहाँ पे अपना प्रेफरेंस में जाके नेटवर्क को सिक्योर करने वाला हूँ। तो नेटवर्क प्रॉक्सी, ठीक है, नॉर्मल, और सर्टिफिकेट जो हमें इंस्टॉल करना है। सो अथॉरिटीज में इंपोर्ट डाउनलोड सी certificate.dir एंड ट्रस्ट, एंड दैट्स डन। सो ओवर हियर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो सो यहाँ पे मेरे बैकएंड में पहले तो nmap स्कैन हो गया था जिसमें पोर्ट 22 ओपन था, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ओपन SSH, और यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है जो कि मेरे अपाचे सर्वर है जिसमें दिखा रहा है यहाँ पे SandOS सर्वर। तो अगर आप यहाँ पे देखो 111 जो कि हमारा आरपीसी है, और अगर यहाँ पे देखो 443 भी है जो कि हमारा SSL वर्जन 2 सपोर्टेड है, जो कि ओपन है, यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे पोर्ट 631 जो कि आईपी है, जो कि कप्स है, और 104 एंड 3306 जो कि यहाँ पे MySQL बैकग्राउंड में चल रहा है। सो MySQL चल रहा है बैकग्राउंड में, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे SQL तो चल ही रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज बॉक्स राइट नाउ। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगा रहा हूँ एज पर द एसक्यूएल इंजेक्शन। ये अगर मैं बात करूँ, ये बैकस्लैश किस लिए काम आएगा, हमारा एरर हैंडलिंग के लिए। अगर आप गूगल पे जाओ, एरर हैंडलिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, सो एरर बेस्ड की बात हो रही थी यहाँ पे, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। Error based techniques when an attacker tries to insert malicious queries in input field and get some error which is regarding SQL syntax. The error messages give you information about the database used and the error occupied in the query. So हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो error निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें से मैं यहाँ पे यूज करूँगा बैकस्लैश। I can see no error. Let's use single quote bracket, no error, double quote, double bracket. So let's use sleep command, sleep for 5. But over here in the sleep command, you have to use single quote.
and you have to give the condition. Nope, there's nothing. So what we can try SQL injection authentication bypass cheat sheet. Let's try this. SQL authentication bypass cheat sheet. So अगर आप लोगों को याद हो जब आपने SQL इंजेक्शन किया था अपने CH में, तो आपने SQL में ये पढ़ा होगा 1 and 1 की क्वेरी। 1 and 1 की जो क्वेरी है यहाँ पे वो आपकी बेसिकली बाईपास करने के लिए बात होता है, ट्रू स्टेटमेंट के लिए। So I'm gonna do, I'm gonna make a proper text file of this content. मैं proper text file बनाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं एग्जामिन करूंगा, बाईपास करने की कोशिश करूंगा अपने SQL इंजेक्शन से। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये ऑथेंटिकेशन बाईपास, SQL इंजेक्शन ऑथेंटिकेशन बाईपास चीट शीट। तो मैं अगर आप यहाँ पे देखो एक्सप्लॉइट में मैंने यहाँ पे फोल्डर बना रखा है SQL के नाम से, जिसमें मैंने सारे के सारे वर्ड्स डाल रखे हैं 1 and 1 की क्वेरी को। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स अटैक करने वाला हूँ, एक परफॉर्म करूंगा ब्रूट फोर्स अटैक। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना इंटरसेप्ट द पैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे कैपिटल A एंड कैपिटल B, इंटरसेप्ट ऑन एंड लॉग इन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे यहाँ पे करना है वो आपकी इंटरसेप्ट करना है पैकेट को, जिसमें मैं देखूँ यूनेम एंड पासवर्ड B है जो मैंने डाला था यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ लॉगिन था नॉर्मल सा, तो मैं यहाँ पे इंट्रूडर को यूज करूंगा फॉर ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, और इस पैकेट को मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि इस पैकेट को मैं एनालाइज करूंगा अपने बर्ब सूट के थ्रू। सो मैं इस पैकेट को रिपीटर के पास भेज सकता था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसको B कर दे रहा हूँ, प्रॉक्सी इंटरसेप्ट लॉगिन एंड सेंड टू रिपीटर, ड्रॉप पैकेट। सो रिपीटर के पास मेरा पैकेट आ चुका है यहाँ पे। अब रिपीटर के थ्रू हमें एग्जामिन करना है कि वो क्वेरी रन करता है नहीं। अगर मैं SQL क्वेरी की बात करूँ तो मैं इंट्रूडर यहाँ पे यूज कर सकता था, जहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूँ एक प्रॉपर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे 7 पेलोड हम सेट कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर पे, जिसमें से मैं अगर टैग करूँ क्लियर टैग, तो मैं ट्राई करूंगा यूनेम पे और पासवर्ड पे। तो ट्राई करते हैं इस पे, पासवर्ड पे यूनेम पे अटैक करेंगे और पासवर्ड पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे जो अटैक टाइप यूज होगा वो हमारा क्लस्टर वॉर्म होगा। क्यों? बिकॉज हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना है, एक क्वेरी के साथ दूसरी क्वेरी चेक होनी चाहिए। पोजीशंस पेलोड 1 एंड पेलोड 2, अब यहाँ पे सेट होनी है हमारी वर्ड लिस्ट। सो मैं यहाँ पे पेलोड 1 में SQL की पेलोड टेस्ट करूंगा जो कि 50 वर्ड्स है, और पेलोड 2 में भी सेम डिक्शनरी डालूंगा 15 to 50 2500। और अगर आप यहाँ पे देखो सेम वर्ड्स ही हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट। और अगर आप ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस में आप देखोगे कि यहाँ पे नेम ऑफ नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रेड्स की बात होगी। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वी नीड टू सिंपली परफॉर्म अ ब्रूट फोर्स अटैक। So over here we have a proper thing, but there is a difference। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, 200, यानी कि सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो ओके रिक्वेस्ट आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल कि यहाँ पे सारे के सारे 200 रिक्वेस्ट ही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स होता है हमारे सर्वर साइड से, रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन, यहाँ पे 200 दिखा रहा है। चलो इसका शो रिस्पॉन्स देखते हैं।
सेम, यानी कि वो पेलोड यहाँ पे काम नहीं किया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में उसकी रिलेशनशिप देखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे या नंबर ऑफ लेंथ की बात करते हैं। हम्म, तो इस फर्स्ट वाले की देखते हैं, फर्स्ट वाला काम करता है कि नहीं। फर्स्ट वाले में मैं अगर देखूं यहाँ पे पैरामीटर जो हमारा एड यूनियन था, उसमें देखो कौन सा पैरामीटर जा रहा है, एडमिन पैरामीटर जा रहा है, तो भी ये था एडमिन सिंगल कोट स्लैश। और दूसरे पैरामीटर में क्या जा रहा है, हमारे पासवर्ड में हमारे और कंडीशन जा रही है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं रिस्पॉन्स कोड देखता हूँ कि रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है। व्हेन लॉग इन इनटू एडमिनिस्ट्रेटर, वेलकम टू द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर वेब कंसोल। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको और किसी और के पैरामीटर को, जैसे कि 800 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड में देखना रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, जो कि हमारा ये दिखा रहा था। और हमारा जो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला वेब, वेलकम टू द बेसिक वेब एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। तो यानी कि ये है कि ये बाईपास हो गया हमारा। और ये किससे बाईपास हुआ है, हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन ऑथेंटिकेशन बाईपास चीट से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वर साइड के रिस्पॉन्स को, कोड को समझना। अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने स्टेटस में क्या किया था, मैंने लो कर दिया था और लेंथ को मैंने हाई कर दिया था। तो आप यहाँ पे सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेटस यहाँ पे काम कर रहा है बाईपास करने के लिए। अब पॉइंट सी दिस वन, अगेन दिस वन, दिस इज डिफरेंट वन। सो ये जो टेक्निक ये यूज होती है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन ऑथेंटिकेशन बाईपास चीट शीट के लिए यूज होती है। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन यूज फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखो, पेलोड्स में हमने यूनेम एंड पासवर्ड ही डाला था अटैक करने के लिए। ये जो आपका अटैक था, ये आपका वास्ट टॉप 10 का A1 था। तो अगर आप यहाँ पे देखो, injection attack occurs when the user is able to input untrusted data and tricking the application system to execute initiate commands. Injection injection can be your SQL queries, your PHP queries, your LDAP queries, and your OS command injection also. What to inject? Queries, OS commands, codes, URL argument manipulations. Where to inject? Wherever a user input is required or can be modified data. It can be text box, a username and password field, and a field box field, and a comment field. Why to inject? To check the application is vulnerable or not. So if you see over here, they have given one more thing. Welcome to the basic administrator web console. So अगर आप यहाँ पे देखो ये काम कैसे करता है, मैंने यहाँ पे सिंगल कोड यही लगाया था, universal key, and this is a blind SQL injection, blind in Boolean type. See? You can try the various techniques that can be used over there. Think about the logics, how a web application works in the real life scenarios. That's the important thing. For example, you can see a ping a machine on the network. Ping a machine on the network. What is this? Welcome to the basic administrator web console. First of all, you should know about what is a web console means.
A web console is a web-based application that allows end user to manage their data. You can easily access the web console for any of the remote computer and run the following web server browsers. And if you simply write the console word, let's write console. What is the definition of console? It's like a kid's definition of console, a panel of which can deal with switches or controlling and electronic machines. So if you write simply web console with this one, you will see a proper different manner. A console where you can execute any commands. For example, this is also a console where you can type any commands. And this attack, which is over here, it's also an injection attack. And an injection attack, which is also your OS command injection. Command injection is an attack in which the goal is to execution of arbitrary commands on the host operating system via a enable application. Command injection attacks are possible when the application processes unsafe user supplied data from cookies, HTTP headers, and etc. For example, you can see ping a machine on a network. Let's do 127.0.0.1. It's pinging a machine. But if simply see this one, if I'm doing ping -c packet 3 localhost, it's gonna simply doing the same thing. But if I want to add some multiple applications, अगर मुझे कुछ multiple commands अगर add करने हैं, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलम यूज करता हूँ. सेमीकोलम यूज होता है आपके दो कमांड्स को ज्वाइन करने के लिए. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, बाद में एक और पिंग कमांड चलाना, उसको सिर्फ 2 पैकेट भेजना, और वो होना चाहिए मेरे सर्वर में राउटर को. साथ में मैंने 2 पिंग कमांड चलाए थे. 3 मैंने किसको भिजवाए थे? अपने लोकल होस्ट को, और 2 मैंने किसको भिजवाए थे? अपने राउटर को. मान लो कि और भी कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि मलिशियस कोड, जैसे कि cat etc पासवर्ड. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, I can execute some commands with the help of semicolons. An OS command injection is also an attack where an attacker simply gain unauthorized access. Let me show you this attack through a burp suite. So we have a simple. So यहाँ पे देखते हैं send, and I can see commands are running over there. 200, the server side request, the response that is getting properly. HTTP date, server, X powered by, content length, file type, and connection. So let's try semicolon over here. Semicolon with who am I? I am Apache. Let's write cat etc password. You can see all the commands are being executed. See, root, bin, daemon, ldaemon, lp, syntax, shutdown. These are all the files which is running, and you can see username John and Hazel. Why this is happening? Because server side एक client के supplied data को filtered नहीं कर रहा. For example, I can use double pipe. डबल पाइप में क्या होगा कि ये सेकंड वाले को टर्मिनेट कर देगा. अगर सिंगल पाइप डालोगे तो ये फर्स्ट वाले को टर्मिनेट कर देगा और सेकंड वाले को एग्जीक्यूट करेगा. तो अगर मैं एक अटैकर हूँ, so what thing I'm going to look for getting a reverse shell. So for that I'm going to look for netcat है वहाँ पे. No, there is no netcat.
Let's see, do we have Perl over there? Yes, we have Perl. Through command execution, you can simply enumerate all the commands. For example, you can see netstat an antup. What are the applications are running? Sorry. See. These are some of the applications are running on the server side. So what we're gonna do? We're gonna try to gain a reverse shell. So मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर के साथ भेजूंगा कुछ malware. तो मैं यहाँ पे क्या भेजने वाला हूँ? So मैं यहाँ पे pen test monkey ओपन करने वाला हूँ. Yes, pen test monkey. So the J Taylor notes, yes, from the 2018. So we're gonna steal a reverse shell command from here. Okay, so I have a proxy like okay, so कोई issue नहीं. So यहाँ पे अगर आप देखो shell की बात करें, reverse shell is so over here, if you are very lucky enough to find a command execution vulnerability during the pen test, pretty soon afterwards you will find probably an interactive shell command execution later. If it's possible to add a new account, SSH key, our host file, and just log in. The next step will be likely together throwing a reverse shell or binding a shell on the TCP port. Your options for creating a reverse shell are limited by scripting languages installed on the target system. तो मैं यहाँ पे Perl देख रहा था कि Perl system वहाँ पे था. So this is a proper reverse shell on the Perl command, जो कि मैं क्या करने वाला हूँ अपने उस सर्वर में एग्जीक्यूट करूँगा अपनी आईपी के साथ. जैसे कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पोर्ट देना था 4448 और यहाँ पे आईपी देनी थी 192.168.110. सो मैंने पोर्ट जो दिया यहाँ पे 4448 दे रखा है. सो सबसे पहले नेटकैट न्यूमेरिक लिसनिंग रोबोस पोर्ट 44448 और यहाँ पे हम अपनी शेल को एग्जीक्यूट करेंगे. So the shell has been executed properly and अगर मैं यहाँ पे देखूँ I have a proper shell of the server. तो यहाँ पे जो रिवर्स शेल की बात होती है, रिवर्स शेल में क्या होता है कि सिंपली हम सर्वर साइड से कुछ malicious कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं. And there are lots of other techniques that we can use for. And the most important part is to gather the information. So reverse shell में आपको malicious piece of code victim की साइड से रन करना पड़ेगा. So you can implement your own shell or you can simply get those shell from the pentest monkey. And you can download one by one all the shells from there. So the logic behind of this shell is to gather the information. So so यहाँ पे let's Google it. तो यहाँ पे gotmail की बात आती है और payaku. So यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम post exploitation phase करने वाले हैं. Post exploitation phase where we have to gather the information about the target.
So यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, there are lots of commands given. What is a distribution type and version? What is the kernel version over here? What we can learn from environment variables? Is any printer? तो अगर आप ये चीज देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है जो आप अपने अपकमिंग सेशंस में पेन टेस्टिंग में यूज कर सकते हो. Any of the services setting misconfigured? What are the jobs are running? Any plain text username and password? Communication channels. So there are lots of things can be done over here one by one. But the most important part is together to read about the PIA2. In the PIA2 session, as we have discussed, that there are around 6 type of attacks. So ये जो Capatrix की जो मशीन है, इसमें भी आपकी फर्स्ट काली मतलब आपकी कर्नल की एक्सप्लॉइट है. Guys, give me 2 minutes, okay? And no talk. Yes. So over here, so इस वाले जो मशीन में हम लोग करेंगे, इस मशीन में सबसे पहले जो हम टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे काली वर्जन और उसका रिलीज काली हम इसमें जो अटैक करेंगे हम लोग कर्नल एक्सप्लॉइट करेंगे. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कर्नल वर्जन को कैसे देखते हैं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आर्किटेक्चर कौन सा है, ये डेबिन बेस्ड है या रेड हैट बेस्ड है. तो सबसे पहले जो हमने एनमैप किया था, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सैंटोस है, और सैंटोस हमारा रेड हैट बेस्ड होता है. तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे कैट ईटीसी, या हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं कैट ईटीसी एस्ट्रिक रिलीज. सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे सैंटोस 4.5.
देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे कर्नल वर्जन निकालने की कोशिश करूँ तो यूने वाईफाई नहीं कर सकता हूँ, या कैट प्रोसेसर वर्जन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे दिख रहा है 2.6.5। सो एक प्रॉपर कर्नल एक्सपर्ट तब होता है जब आप इसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन के टाइम पे काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन सर्च फॉर द कर्नल एक्सप्लॉइटेशन पार्ट। सो यहाँ पे मैं CentOS रिलीज वर्जन 4.5 को टारगेट कर रहा हूँ मेनली। सो ओवर हियर एक्सप्लॉइट, यस। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखा, we can use any other type that you want. So for example जैसे कि यहाँ पे टॉप पे दे रखा है आपका, यहाँ पे आपको लिनक्स की कर्नल वर्जन की पूरी 2.6 से लेकर 2.16.19 से वर्जन दे रखा है लिनक्स का। और यहाँ पे अगर आप देखो व्हाइट बॉक्स CentOS 4.5 और 4.4 है यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या है, append data privilege escalation part। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन डाउनलोड द एक्सप्लॉइट। सो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस एक्सप्लॉइट ऑन द एक्सप्लॉइट। सो पहले से वहाँ पे पड़ा हुआ है तो रिप्लेस कर देते हैं। सो ओवर हियर यू कैन सी द एक्सप्लॉइट ऑन माय लोकल सर्वर। बट अब बात आती है कि मुझे ये डेटा को ट्रांसफर करना है। सो pwd कहाँ पे हूँ मैं, HTML में हूँ। सो cd/_all। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स है ये आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी में क्या होता है, बूट में क्या होता है, डिवाइस में क्या होते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स आपकी पता होना चाहिए और हर एक सेक्टर का अलग अलग फंक्शन होता है। So you have to analyze, you have to manage all the things one by one over there. So our main task would be to identify or to discuss. So यहाँ पे हम लोग cd temp में फाइल डालेंगे क्योंकि हमारे पास टेम्परेरी फोल्डर में परमिशंस होती हैं। सो यहाँ पे पहले से मैंने एक्सप्लोर डाल रखा था बट मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, rm रिमूव। सो अगर आप देखो या दिस इज प्रॉपर थिंग। सो हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि हमें ये जो 9542.c जो फाइल है इसको सेंड करना है इस फोल्डर में। तो रोपनॉप फाइल ट्रांसफर, Ropnop file transfer in Linux and Windows. So one of the best for post exploitation part. So यहाँ पे आप यूज कर सकते हो HTTP यूज कर सकते हो, FTP यूज कर सकते हो, FTP और SMB। So over here जो हम यूज करेंगे वो हमारा होगा HTTP। Starting the server, the way I usually serve a folder, download the FTP server is pretty standard. You can access the database। और अगर आप यहाँ पे देखो, two way I usually serve a file over HTTP from Kali Linux is one is your Apache and one is your Python HTTP server। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, हम लोग पाइथन HTTP सर्वर यूज करेंगे अपने फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो आई गेस वी नो ऑलरेडी दिस वन बट फिर भी बता रहा हूँ। सो डिफॉल्ट पोर्ट 8000 पे काम करेगा। और जो आईपी एड्रेस है मेरा यहाँ पे वो है 110। सो यहाँ पे एक URL क्रिएट करते हैं हम। HTTP मेरा सर्वर की आईपी एड्रेस जिसमें पोर्ट ओपन कराया मैंने, पोर्ट 8000 में। और उसमें कौन सी फाइल है मेरी, 9542.c फाइल। सो आपको एक पूरी स्पेसिफाई URL देना पड़ेगा वहाँ पे। सो लेट्स कॉपी दिस वन एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, wget भी लगाया टू फेच द फाइल। wget आपके डेटा को फेच करने के लिए कोई भी URL सेक्शन से। So our main target is इस फाइल को कंपाइल करना है क्योंकि C फाइल है।
तो कंपाइलर के लिए मैं यहाँ पे जीसीसी यूज करूंगा -o आउटपुट देने के लिए, जो कि मैं इसका नाम दूंगा एक्सप्लॉइट और मेरे फाइल का नाम। So the least and the last, what we're gonna do, we're gonna try to exploit and trigger it out because यहाँ पे मैंने execution permission दिया। So when an exploiter do exploit, he will get an exploit over there because the kernel was vulnerable, and we can see who am I am root. And we can see over here we are on the root directory pwd. So there are वहाँ पे बहुत सारे तरीके अटैक्स हो सकते हैं जो उसको फॉलो कर सकते हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप उसको कैसे एग्जामिन करोगे, बिकॉज लास्ट टाइम में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। क्योंकि मैं बॉटपिल की बात करूँ या पायाटो की बात करूँ, दीज आर द टू वेबसाइट्स जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। So you can try different kinds of things over here. There are many topics, many things that you can learn. So this was all about this machine.